numerical technique. Okay, so this is a chapter in advanced part of mathematical physics and very important topic in CSIR for CSIR and even questions in other exams also they ask from this. But in CSIR, we get one question and that is for 5 marks. Sometimes they have asked 2 questions, but let us take it as minimum. One question is asked from this. And this chapter is especially very important because, you know, nowadays the coding part is developing very fast. So the computational and numerical techniques, they are now a very important part of your physics. तो physics में जो भी हम models बनाते हैं, whatever models we make, उनके simulations के लिए, उनके computational calculation के लिए numerical technique is very important topic. So let us see how the syllabus is, what we are going to study in this. So whatever we have studied in mathematical physics, like all the chapters which we have done analytically, can be done numerically also. Okay, they can be done numerically also. For example, let's say algebraic, we solve algebraic equations and transcendental equations. I mean the equation consisting of exponential terms, algebraic terms, x square, x cube, e to the power x, sine hyperbolic x. ये सारी चीजें अगर इक्वेशन में प्रेजेंट हो तो how to solve them, that means how to find the roots of the equation. So algebraic and transcendental equations. Then we have integrals. We have to solve integrals. So integrals, you know, a very small part of total integrals we can solve analytically. Integrals are always a challenge. So numerical techniques developed की गई हैं, and nowadays they are very powerful with growing computers. हम आसानी से किसी भी differential equation को किसी भी integrals को हम solve कर सकते हैं. Okay, so we will discuss few techniques here, and then also we will discuss few techniques to solve ordinary differential equation. And then we will discuss few techniques for interpolation and extrapolation. So actually computers के आने से बहुत पहले mathematicians and physicists, they started playing with numbers. जो equations directly analytically solve नहीं हो रही थी, उनको numbers के through people started playing with it. तभी आइडिया भी नहीं था कि कंप्यूटर जैसी कोई चीज आएगी. ओके, सो इवन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पीपल कुड नॉट सी दैट कंप्यूटर आ जाएगा और वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि इट कैन सॉल्व एवरीथिंग. ओके, बट द टेक्निक्स, most of them, they were developed before there was anything like computers, because people already started playing with numbers. People already started finding different routes. जहां एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं है वहां पे सॉल्यूशंस को कैसे गेस करें. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. लाइक टू सॉल्व द एरिया ऑफ सच अ रैंडम फिगर, people thought it like this, that let us put it in a rectangle
Okay. And let the area of this rectangle is A dash. And let the area of this random structure is capital A. I want capital A. Okay. So people suggested we can calculate it by playing with numbers. How? Just from a distance, throw darts. Darts, you know, वो जो निशाना लगाने वाला होता है, right? Yes. So up you throw the darts, and suppose to n is total number of darts. Okay. N dash is suppose total number of darts thrown. Total number of darts thrown. Okay. जो भी इसके अंदर आ रहे हैं, they will be counted as n dash, and n is number of darts which fall inside this area. Number of dart in capital A. Okay. So if you want to get this area, you can use the concept of probability that A will be equal to n by n dash into capital A dash. So if n is total number of dart that falls in A, and n dash is the total number of dart falling in the rectangle, that means total number of dart thrown. So n by n dash will be the dart, the probability of the dart falling in capital A. So this is the probability of dart falling in capital A, and multiplied this A dash will give this area. ये समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. So see, इसी के बेसिस पे आगे बहुत सारी टेक्निक्स, मॉन्टे कार्लो एक्सेट्रा, जो सिमुलेशन टेक्निक्स हैं, which are doing nowadays, they are doing exceptional things. बट आइडिया जो सोचने का है, तो उस समय जो वो प्रोफेसर थे, पीपल यूज टू लाफ ऑन हिम कि ये क्या बेवकूफी है कि पीएचडी स्टूडेंट ले लिया है और उठा के डार्ट फेंक रहे हैं दिन भर, राइट? सो बट नाउ यू कैन सी, सो दिस वाज लाइक इन early 17th century. So people started thinking in this direction that playing with numbers can give, and nowadays it is very simple. Just you take this area and generate random numbers. Those random numbers which comes inside this, calculate it separately. Total random numbers inside this is, and now simply you can calculate. So without throwing the dart, you can use computers to do this. Okay. So मेरे कहने का मतलब ये है कि जो numerical techniques हैं, वो काफी पहले से लोगों ने, you will see that in most of the technique न्यूटन का नाम आता है. तो यानी कि बहुत पहले से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि what can be the possible alternative ways to solve the problems, not by the analytical method, by some other route. So one of the method was playing with the numbers, and numerical technique वहां से उसका start हुआ. But now it is a very, very well developed. So we will see one by one. Let us start by the first one. And I will recommend a book by S.S. Sastry. Okay. This I will be following for this chapter, for this chapter numerical technique. You can find it in the folder that I have shared in the description of our WhatsApp group. You can check it from there. Okay. So outline is clear. Anybody wants to ask anything about the outline? Clear है सबको? Okay. So, सर yes. सर एक बार ये डॉट्स वाले जो आपने कॉन्सेप्ट है, एक बार प्लीज बताएंगे. क्या बताएं? सर आपने जो भी ये डॉट्स को लेके जो आपने रेशियो डिस्कस किया है ना, वो एक बार प्लीज रेशियो एक्सप्लेन नहीं, कर दीजिए. प्रोबेबिलिटी है. ओके.
दिस इज द प्रोबेबिलिटी n डैश n बाई n डैश क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट द डार्ट will fall in A। तो देखो अगर सारे के सारे अगर n इज इक्वल टू n डैश हो जाए तो a इज इक्वल टू a डैश हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। बट जैसे जैसे एरिया छोटा होता जाएगा ये प्रोबेबिलिटी भी छोटी होती जाएगी। एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल, देन प्रोबेबिलिटी इज वेरी, सो दैट मीन्स द एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी, राइट? सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये आइडिया दिया गया। आपको क्या नहीं समझ आया? सर अब समझ गई, मैं उसको रेशियो ले रही थी। सो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो 1000 डार्ट फेंके गए, इनमें से 100 डार्ट इस एरिया में गिरे और a डैश 1 मीटर स्क्वायर था। तो इसका मतलब है a की वैल्यू 100/1000 इंटू 1 हो जाएगी। ओके, यस सर। एनीथिंग एल्स? नो सर, इट्स क्लियर नाउ। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है ना, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द कंप्यूटेशनल। लाइक when I was student in IIT Delhi during my PhD, so मैंने जो कोर्स किया था that was numerical and computational methods in research। कोर्स का ये नाम था। So because ये जो सारी टेक्निक्स हैं उसको बिना कोड किए यू हैव टू कोड देम, ताकि वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दोनों टॉपिक्स की एक साथ होती जाए। वन पार्ट इज योर न्यूमेरिकल पार्ट एंड अदर पार्ट इज योर कंप्यूटेशनल पार्ट। But for the CSIR net exam, we have to just discuss this part of numerical techniques. So I will be discussing all of them. Okay. आप लोगों ने भी अपने MSc में किया होगा जरूर, किया है या नहीं? Yes or no? यस सर। यस सर, किया था। किया है ना? तो पहला है algebraic and transcendental equations। इसे जरा मैं ये भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि कैसे जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल टेक्निक की। So like suppose you have equation x square minus 1 is equal to 0, x minus 1 is equal to 0. What is the solution of the first equation? Yes, X equals to 1. एक्स इक्वल्स टू 1। x is equal to 1. What is solution of this equation? एक्स इज इक्वल टू X is equal to plus minus 1. X is equal to 1 and minus 1. So no numerical technique is required up to this point, right? But if your equation is like this, x cube minus x square plus e to the power x minus 1 is equal to 0. Can we solve it? Like you are saying, like you are suggesting the solutions for this. Can this also be solved like that? नो सर। No, sir. So अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखोगे, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो नंबर है ना, नंबर गेम, नंबर थ्योरी, नंबर वाला जो डोमेन है, कंप्यूटरॉनिक्स, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल जिनको तुम जानते हो, ऑल दोज हैव वर्कड इन दिस डोमेन, इंक्लूडिंग कॉशी, रीमन, गॉस, रामानुजन, न्यूटन। सो इससे भी काफी अगर पहले चले जाओ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक। सो यू नो फॉर quadratic equation,
we have Shri Dharacharya equation, right? Yes, sir. Which directly can give, and that is not The roots. आपको हमें आपको बहुत obvious लगता है, but that is not that obvious कि किसी भी quadratic equation का root निकाल देता है, right? So that is something very, very intelligent. So this equation can calculate actually कुछ चीजें हम इतने पहले से पढ़ते हैं और इतनी बार पढ़ते हैं कि हम उनकी ब्यूटी को समझना छोड़ देते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स बताने के लिए इक्वेशन है, श्रीधराचार्य मेथड है. अगर ध्यान से सोचो तो इट इज सो पावरफुल कि कोई भी इफ देयर इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट कैन डायरेक्टली टेल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. एंड it took 100 or 200 years, I am not sure. People wanted a equation which is cubic equation, and they wanted same method, some method which can directly give the roots of cubic equation. Okay, and it took really a lot of time. I have just forgotten कि 100 years or 200 years. It took lot of time कि जब एक मेथड बनाया जा सके जिसके हेल्प से हम cubic equation solve कर पाए. Okay, so Cardan's method is there which can be used to solve cubic equation, but that is also very typical. You sometimes you find time, so just go through a video on YouTube about the history of cubic equations. Okay, so अब ऐसी equations की बात तो भाई you cannot develop an analytical method which can directly solve any equation of this type. So cubic में इतना time लगना. Okay, so we have numerical techniques. Why? Because ultimately we have to find a number which we put in this equation, and if right hand side is 0, that means that is solution. Yes or no? So people Yes. started thinking in that way. If I can find a number by any of the roots, if I can find a number and that can be substituted here, right? And if I put that number here and I get 0 on the right hand side, then that is the answer, right? So you will see, don't take these methods very obvious. ये सोचो कि उस समय कैसे सोचा होगा, कितने इंटेलिजेंट तरीके से सोचा होगा. सो हर मेथड को हमें इस नजर से देखना है और साथ साथ सीखते भी रहना है. ओके, सो आई विल डिस्कस methods one by one to solve such equations. So let me start. समझ में आ गया ना क्या करने जा रहे हैं? Yes. Everybody understood this? What we are going to do? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the first method under this is known as bisection method. Bisection method. Okay. So the idea is very simple, that if you have any polynomial, not polynomial, any equation, any transcendental equations like this, fx is equal to 0, it is like this. So actually, if at some x it is becoming 0, so that means it will be passing at some point, it will be passing from the x-axis. Yes or no? Yes. Yes, sir. भाई अगर fx is equal to 0 है तो x की वो वैल्यू जहां पे ये फंक्शन 0 हो जाता है तो कहीं तो कट करेगा x एक्सिस को. करेक्ट? It will cut x-axis somewhere. So now उसमें क्या देखा कि suppose this is the root, हाँ?
I don't know what is the root. I will just take 2 points x1 and x2. At x1, the value of the function is fx1, and at x2, the value of the function is fx2. तो अगर ये ग्राफ इस तरीके से कट करके ऐसे जा रहा है, so that means fx1 into fx2 should be less than 0. Like, please see this. Like, suppose this is 2, this value is 2, and suppose this value is -3. So 2 into -3 will be less than 0. Agar it is less than 0, so that means this graph is cutting at some point, and that point lies between x1 and x2. First of all, understand this. Yes, sir. बोलिए अनुज, क्या नाम है आपका? Yes, sir. Yes, sir. अनुज ना? Anuj. हाँ Yes, sir. अनुज, ठीक है ना? Yes, sir. सबको समझ में आई ये बात? बस इतना ही है ये. Yes, sir. Clear. So if there is a point at x naught, x naught के लेफ्ट और राइट में 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि द सॉल्यूशन लाइज इन बिटवीन? तो मैं वहां फंक्शन की वैल्यूज निकाल लूंगा, और अगर मैं वो मल्टीप्लाई करूं, सो दैट शुड बी लेस देन 0. सो दैट मींस इट विल बी कटिंग द एक्स एक्सिस. ये कितना कितना मतलब इंटेलिजेंट चीज है, पहली पहली बार सोचना. यस और नो? Yes. Yes, sir. So then, but maybe we have taken this very far. So how to come closer to this? So once I am sure that this is the point, I will calculate the next point x3, and that will be x1 plus x2 by 2. So जैसे ही मैं x1 plus x2 by 2 करूंगा, I will get a point x3 like this. Yes or no? Yes, sir. Then I will again get the value of the function at x3. Suppose it is this. So again, I will do the same thing, that fx1 and fx3 is negative, or fx3 and fx2 is negative. I will check that. Whatever is negative, that means our point is in between that. For example, if x3 is here, so that means our point is between this. So that means fx1 and fx3 is negative. So that means our point lies between x1 and x3. And again, I will go for x4. That will be x1 plus x3 by 2. So jumping left, right, and I will be coming closer and closer to the x0. And if I do it large enough, I will be very, very close to x0. So this is the method. अगर यही हम बार बार रिपीट करते जाएं, तो we will be coming closer and closer to the x0, and that value of x0 we will get, because we will do it many times. जितना accuracy चाहिए उसके हिसाब से हम we can do it. Okay? So this is the method. Clear? Yes, sir. And like you start getting the values x0, then you take x1, x2, then suppose you get x3, x4, x5, like that you start getting the points. So तुम ये देखते जाते हो कि ये बदलना बंद हो रहा है कि नहीं. Like if you are coming closer and closer to a point, so these points will stop changing. So अगर 3 decimal place तक चाहिए तो वहां पे stop कर दो, 4 decimal place तक चाहिए वहां पे stop कर दो. Depending on the accuracy, you can stop. And
if you want to calculate the percentage error, that means how much it is changing. So you can write the percentage by calculating x5 minus x4. Suppose you want please close your mic. 20 मिनट की रहती है। कौन है? निशु? निशु आप माइक ऑफ कर सकते हो? ओके। तो जैसे मैं पूछूं कि कितना चेंज हो रहा है, तो like I start getting the values, so I can just calculate the percentage error, and this should be decreasing because you are coming closer and closer to x naught, so the change in the value will be decreasing. Okay, ठीक है ना? सर हाँ, सर जैसे हमने ये किया है x3 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2। सर ये पॉजिटिव भी तो आ सकता है ना नंबर? पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। नहीं, फिर बाद में आपने लिखा fx1 मल्टीप्लाई बाई fx3 लेस देन 0, ये फिर तो ग्रेटर हो जाएगा अगर पॉजिटिव आ गया fx3। अगर देखो, कोई एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मान लो ये है, मान लो रियल पॉइंट कहीं यहाँ है। ओके, दिस इज 0, दिस इज 1, और रियल पॉइंट कहीं मान लो यहाँ है बीच में। तो अब तुमने हाफ किया, सर तो मान लो यहाँ आ गए। यस सर। तो अब रियल पॉइंट इसके और इसके बीच में नहीं है, ये सब बीच में। और अगर तुम इधर आ गए तो इसके और इसके बीच में है। तो किसी के तो बीच में है ना। यस सर। Either it is between 0 and this, or it is between this and this. Okay, only two possibilities will be there. ओके So either fx1 and fx3 will be negative, or fx2 पर fx2 या तो x2 fx3। के बीच में आ जाएगा। ठीक है, यस सर यस। तो we will check that. चलो मैं एक सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सर हम्म, जिस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा उसी के लिए ये वैलिड होगा ना, मतलब अगर ग्राफ कुछ डिफरेंट बन गया तो। जैसे जैसे अभी ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये अगर अपवर्ड मतलब इन्वर्टेड ऐसा आ गया तो fx3 वहाँ चेंज हो जाएगा ना। मान लो ऐसा है, ये कह रहे हो? नहीं सर, हम्म, ये जो डाउनवर्ड जा रहा है ना, मतलब नीचे का पोर्शन जो नेगेटिव x एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव y एक्सिस के इस पे, वो अगर ऊपर चला गया तो। मतलब you are saying this? हाँ यस। तो इसके तो रूट ही नहीं ना, it is not cutting x axis. No, it is passing through x axis and going to value. It is not cutting the x axis. Okay. It is not cutting the x axis, so it will have no roots. Yes. Okay. Chalo, let us see. Using a question, I will show. So percentage वाला भी जरा नोट कर लो कि suppose you want to calculate percentage error at some step, so you will write x5 minus x4. Suppose you want at fifth step, so this into 100. This will give you the percentage error. Okay. So जैसे जैसे iteration में हम आगे बढ़ते जाएंगे, this will become smaller and smaller.
because you will be going closer and closer to the true value. Correct? ठीक है भाई? Yes. चलो. Let me take a question. So this is that book, Introductory Methods of Numerical Analysis by S.S. Sastry. So this you can find. Okay. Maybe you आपके पास हो भी जब आपने course किया हो. So let me take a question. The question is this. Find the real roots of the equation x cube minus 2x minus 5 is equal to 0. And real life में we will have to guess 2 points जिसमें एक पे ये पॉजिटिव हो दूसरे पे नेगेटिव हो. समझ में आ रही बात ना? जैसे what are the 2 points that you will take? So real life में तो you have this equation and you have to guess both points. But for your exam, because they have to make objective type question, so everybody should get same answer. Isliye they will give the starting point. So here it is given that it is 2 and 3. The root lies between 2 and 3. Okay. So let us calculate F2. What is F2? देखो जरा. 8 minus 4. -1. So it is negative. And F3 is positive. Correct? So F2 into F3 is negative. So it is following the criteria. The root lies between this. पहले इतना point सब लोग समझ. Understand this much first of all. Is it okay? Yes, sir. So now what method I told you? The first step is to get x1. That is equal to, or I can say x0. That is equal to 2 plus 3 by 2, which is 2.5. Yes? So 2.5 will be like here. And what is the value at f2.5? Check. Use calculator frequently ताकि हम अच्छे questions कर पाएं. 5.625. Total value 2.5 cube minus 2 into 2.5 minus 5. What is this value? 14.625. So ये दोनों cancel हो जाएंगे ना? So what we are going to get is positive. 15.625 positive. So that means next number should be taken here. Because negative and positive इसके बीच में होगा. So it will be 2 plus 2.5 by 2. What will be this? Yes?
2.25. Hmm? 2.25. 2.25. So what is f of 2.25? Is it positive or negative? Positive. Nikala? Yes, sir. So it is again positive. So that means this is also positive. So next number is here. That means 2 plus 2.5 by 2, that is equal to 2.125. 2.125. 125. And what is f of 2.125? Again positive. देखते रहना भाई बाकी लोग भी. So this is also positive. So this will be check this much. Hmm. So 2.5, then 2.25, then 2.125, then 2.0625. So if I call this x0, this is x1, this is x2, this is x3. So it is going like this. अब नेगेटिव आएगा. And if anybody asked what is the percentage error at this point, so what I will get is x3 minus x2 by x3 into 100. Tell me this value. बताइए. सभी लोग कर रहे हैं? 3%. Hmm? 3%. Exact. Yes, sir. 3.0. Yes. पूरा ऐसे बोला करो. यहाँ पे न्यूमेरिकल टेक्निक में ये नहीं बोलना है कि 0.03. 3.03. 03%. So this is the percentage error. So जैसे जैसे iteration में आगे बढ़ोगे, this error will keep on decreasing because you will be jumping towards true value at every step. तो देख रहे हो कैसे आप सीधा उसकी तरफ जा रहे हो, रूट की तरफ जा रहे हो, right? तो एक बार डाउट कोई हो तो पूछ लो. Sir, हम्म. like at this step, x3 2.0625, when we put this in the equation and we get the function that is negative, that comes negative, then after that मतलब कोई मतलब यहीं तक स्टॉप कर देना फिर ये समझ के कि ये नेगेटिव आ रहा है. क्या क्या फिर से पूछो. क्या पूछ सर रहे हो? एक्चुअली 2.0625 है ना, तो इसका फंक्शन वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है. हाँ. तो 2.0625. इसका मतलब अगर अब आपको और आगे बढ़ना है तो इन दोनों के बीच में लेना होगा. तो नेक्स्ट नंबर क्या निकलेगा? 2 प्लस 2.0625 बाई 2 कितना आएगा? सर लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सर 3 लेना पड़ेगा ना, 3. वो तो पॉजिटिव आ रहा है ना फिर. ओ सॉरी, ये नेगेटिव है ना, तो यस अब लेना होगा
इसके बगल वाला, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो X3 और 2.125, X2 लेना पड़ेगा। 2.125, ओके ओके। सर, तो ओके कितना आएगा? 2.09375, ये आ जाएगा। ठीक है। सर मतलब कितने इटरेशन के बाद हमें स्टॉप करना है? ये तो कोई भी नहीं बता सकता, ओके। ये आपकी जरूरत के हिसाब से कि आप कितना फाइन कैलकुलेशन करना चाहते हो। तो देखो, जैसे अब आप अगर ध्यान से देखो तो नंबर किस तरफ बढ़ रहा है? 2.5, 2.2, 2.1, 2.0, देन 2.09। तो यानी ये 0 कंफर्म हो गया, राइट? फर्स्ट Yes. डेसिमल प्लेस कंफर्म हो गया, ऐसे सेकंड कंफर्म हो जाएगा, फिर ऐसे चेंज थर्ड पे आने लगेगा, फोर्थ पे आने लगेगा, फिफ्थ पे आने लगेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना एक्यूरेसी चाहिए उतने तक आप ले लोगे। सो आप ऐसे कोड करते हो कि अगर 5वां डिजिट बंद होना, इफ द 5th डिजिट स्टॉप्स चेंजिंग, दैट यू कैन इजिली गेस, राइट, बाय सब्सट्रैक्शन, सो देन स्टॉप। So that means at 5th decimal place, up to 5th decimal place, it is correct and you are stopping. Is it okay? Yes. So when to stop is depending on the nature of the calculation that you are doing. जैसे जब आप पोटैटो खरीदने जाते हो तो आप, सपोज ये ग्राम बताता है, सपोज दिस इज केजी एंड दिस इज ग्राम, तो आप इस डिजिट पे भी ध्यान नहीं देते। यस और नो? यू आर हैप्पी इन दिस। तो सपोज उसने किया 2.5 kg पोटैटो लिया, so why you are not interested in this digit? Because suppose potato is per kg कितना ले लें भाई? सपोज 20 रुपीज ले लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। तो जो ये ग्राम वाला प्लेस है, इसकी कॉस्ट क्या है? 1 ग्राम की 20 by 1000 1000, which is 0. 1 by 50, right? Which is 0.2 rupees. Yes or no? So that's why you are happy with first place. You are not seeing this place. But जब आप गोल्ड लेने जाते हो तो this is gram, this is next digit, next digit, next digit. Okay? So this, अगर ये डिजिट गड़बड़ हो जाए तो 7000 का नुकसान हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर 70,000 रुपए का 10 ग्राम ले लें तो 1 ग्राम 7,000 रुपए का हुआ, राइट? If this digit is not okay, then 700. 700, then 70. 70, then 7. 7. इसके बाद यू आर नॉट इंटरेस्टेड, उतना तो आपसे वो बहुत पैसे ले लेता। ठीक है। तो ये how much accuracy you want, can I tell you? No, it depends on what type of calculation you are doing. So if you are interested in 5th digit accuracy, 6th digit accuracy, or 1 digit accuracy, depending on what type of calculation you are doing. Okay? ठीक है कंचन? Yes, sir. लेकिन एग्जाम में दिया होगा ना, मतलब कहा कितने एग्जाम की चिंता मत करो, ये तो ऑब्वियस सी बात नहीं है कि जब ये इनफाइनाइट लूप चल सकता है तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि दूसरे इटरेशन के बाद आंसर बताओ या तीसरे इटरेशन के बाद आंसर बताओ, तो 4 ऑप्शन में सबका एक कैसे आएगा? बताओ। हाँ सर, दिया होगा। मान लो मुझे 4 ऑप्शन बनाना है, आपको बनाना है, मान लो आप टीचर हो, आप
आपको 4 ऑप्शन बनाना है, आप कैसे बनाओगे? तो या तो Same. आप ये पूछोगे या ये पूछोगे या ये पूछोगे, या पूछोगे 5th स्टेप पे परसेंटेज एरर, 3rd स्टेप पे परसेंटेज एरर क्या होगी, यही सब तो पूछोगे, राइट? Yes. Okay. So let us take another question. Any doubt in this? I am going to erase this. I think method is clear to everyone. Yes, Can I sir. erase? Yes, sir. Okay. Okay, let me take another question. Fx is equal to x e to the power x minus 1 is equal to 0. Okay. And you have to find a root between 0 and 1. This is given. You have to find a root between 0 and 1. So let us do this. How to start? First of all, let us see whether there is a root between 0 and 1. So what is f0? Negative. What is f1? Positive. So yes, there is a root. So 0 is negative and 1 is positive. Correct? Okay. So let us start by taking half, that will become 0.5. And what is the value at 0.5? Batao bhai. 0.5 e to the power 0.5 minus 1. Tell me somebody. So minus 0.17. Minus? 0.17. मतलब negative है ना? Negative है sir. So here value is negative. Now tell me which side I should go. This side? Positive sign की तरफ. 1. So it will be 0.5 plus 1 by 2. And that is equal to how much? 0.7. 5. 0.75. 0.75. 7. So what is f of 0.75? Positive. Positive? Positive. Yes. This is positive. So next digit is here, which is 0.5 plus 0.75 by 2. And that is 0.62. 0.62. So if I write all of them, 0.5, then 0.75, then 0.62. You are moving like this. So at this, check what is the situation. Sir positive है. Positive आ रहा है? Yes sir. 0.167 positive. Positive. So next number, (0.5 plus 0.62)
by 2. That is equal to how much? 0.5625. 0.5625. Is it correct? Check, everybody. This is 0.625. Right? Negative coming, minus So if 0.01. this is the starting point, x0, x1, x2, x3. So this you just got it. And after that, this way it can go on and on. और धीरे धीरे करके points settle होते जाएंगे. Let me give you a data just to tell you how it works. ताकि वो पूरी picture देखी हुई होगी ना तो अच्छा रहेगा. So like 0.5625 के बाद लिखता हूँ. It will start coming like this. 0.5781, 0.5703, 0.5664, 0.5684, 0.5674, 0.5669, 0.5671. इस तरीके से चलता जा रहा है. तो कैन यू सी कि सबसे पहले 5 सेटल हो गया, देन 6 सेटल हो गया, यस और नो? देन इसी तरीके से 3rd डिजिट सेटल हो जाएगी, 4th डिजिट सेटल हो जाएगी, तो इट विल बी गोइंग लाइक दिस. ओके, यहां तक आते आते 0.5671 एरर इज 0.035%. 035%. So this is how it goes. अब कोई डाउट है तो पूछ लो. But for exam point of view, 2 or 3 iterations are enough. They can just ask. They can ask percentage error. They can ask the roots. So ये भी root आपने guess किया है, but with large error. This is also root you have guessed with error, less error, less error, more less, more less, more less, more less, more less. This way you are going towards the true value as you are going forward in the iteration. सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. कोई डाउट है तो बताओ. Let me give you a homework to do. Take this function. Fx is equal to 4 e to the power minus x sin x minus 1. Sin x minus 1 is equal to 0. Okay. And take the starting point 0 and 0.1. 0 and 0.1. Do this question. बस एक ही गलती मत करना. Put all values in radian. You can't put in degree. Degree is no unit, okay? Degree is a converted unit. So everything you have to put here in radian. ये same apply करने की कोशिश करना bisection method. So this will be the end of the class. If anybody wants to ask anything, please you can ask. सर जैसे हम ये एक पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, एक पॉइंट के लिए निकालना है. What do you want to say? नहीं मतलब जैसे हमारे पास कोई जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसके 2 रूट्स हो गए, तो सर सेकंड रूट निकालने के लिए फिर उसके लिए भी 2 अलग पॉइंट्स. बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके बीच में आना चाहिए. ओके, यस सर. सो जब एक रियल रूट पता चल जाता है फिर देयर आर मेथड्स टू गेट सेकंड वन आल्सो. हाँ, ओके सर. अरे हम लोग वी हैव टू जस्ट know the tip of the iceberg. Okay, numerical technique is very very vast. Just we have to cover the syllabus of CSIR. Okay, yes sir. Whatever you think can be done in numerical technique today. Okay, yes sir.
So actually, my research was in numerical and computational domain. So I did the modeling using computational methods, simulation, and electromagnetics में. So I was very much into it. So मुझे complete feeling है numerical technique की. So if you have any question, you can discuss with me. Okay. चलो, thank you so much. Sir, हाँ. Thank you, sir. Yes. question is not related to this part. एक मिनट. Sir, Just wait. calculator allowed होगा? Wait. हाँ, बोलो. Sir, is calculator allowed है exam में? कैलकुलेटर अलाउड होता है, हमेशा आता है, बट पिछली बार नहीं आया. तब क्या करेंगे? बताओ भाई, परमप्रीत. Don't know, sir. कई बार तुम लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हो, थोड़ा सोचो जरा, दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं. अरे भाई, तब तो हाथ से ही करोगे. वो तो ठीक है, जैसे ये फंक्शन तो आ गया। इसका मतलब कि वो ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकते. ये तुम्हारी हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है. हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो हमारी प्रॉब्लम नहीं है. भाई उनको भी पता है, उन्होंने कैलकुलेटर नहीं दिया है. यस और नो? यस सर. तो फिर वो ऐसी प्रॉब्लम देते हैं कि तुम हाथ से थोड़ा करके सॉल्व कर लेते हो. ओके. ओके सर. क्वेश्चंस के बारे में प्रॉब्लम सोचना भूल जाओ. दैट इज देयर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट आवर हेडेक. If they give calculator, inbuilt calculator that they have been doing since many exams, we will use calculator. If they don't give, there are many ways to ask questions in which no calculator is used. Okay. Sometimes they have asked just the formula. Okay. ओके सर. Yeah. Chalo. Thank you so much. Good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Good sir. night, sir. Good night. थैंक यू सर. Thank you.